Let's talk about osteoporosis, the very important topic from bone pathology and the most high yield as far as exam questions are concerned from this particular chapter. So, what exactly is osteoporosis? It's in the name porosis. So, bone which is affected by osteoporosis is characterized by pores. So, the bones are porous and they are also having a reduced bone mass. So, the two characteristic features of osteoporosis are a reduction in the bone mass and the presence of porous bone. So, osteoporosis is a very common kind of disease and you've heard of it a lot. So, it can be localized, for example, associated with disuse osteoporosis of a particular limb secondary to immobilization, but more commonly, osteoporosis is generalized. So, this table over here, this is from Big Robbins because Medium Robbins doesn't quite explain this topic well enough. So, I've previously stated that generalized osteoporosis, which basically means that the reduction of bone mass and the porous quality of the bone is affecting the entire skeleton as opposed to a singular bone or a singular group of bones. So, generalized osteoporosis can be divided into primary and secondary. Okay? And the primary causes are further divided into postmenopausal and senile / age related, as well as something called idiopathic. Now, the thing to bear in mind is that the primary causes of osteoporosis are much more common compared to the secondary causes, but the secondary causes are also important for a number of reasons. So, we divide the secondary causes primarily into endocrine, gastrointestinal associated, neoplasia associated, and drug associated, and finally miscellaneous. Among the endocrine causes of osteoporosis, the most important to remember include hyperparathyroidism, and in this case, the pathogenesis is quite obvious because increased PTH leads to increased bone resorption. Additionally, both hyperthyroidism as well as hypothyroidism are associated with secondary osteoporosis. I will reiterate, osteoporosis is characterized by porous quality of bones and by a reduction in the bone mass. Alright, coming back to the secondary causes, so the gastrointestinal are again pretty obvious because malnutrition, malabsorption both will lead to a reduced availability of calcium and vitamin D, which are important for the remodeling of bone and for the mineralization of bone. So, among the neoplasia which can lead to secondary osteoporosis, by far the most important is multiple myeloma, and you've already studied that in third year when we were talking about the hematopoietic system. So, drugs which can lead to secondary osteoporosis are particularly important. Firstly, we have corticosteroids which antagonize calcium and vitamin D absorption, among other effects. So, you don't really need to know the pathogenesis, you just need to remember that glucocorticoids are associated with secondary osteoporosis. Secondarily, heparin, or more accurately, chronic use of heparin is associated with bone loss. If you remember, when you were doing the hematopoietic pharmacology, we talked about differences between fractionated and unfractionated heparin, and one of the cons of using unfractionated heparin was the fact that its chronic use was associated with bone loss. Similarly, chemotherapeutic agents and anticonvulsant agents are also associated with bone loss, and we know that the characteristic of osteoporosis is a reduction in bone mass and the presence of porous bones. So it's quite important that you remember the names. So I've collected a couple of interesting
diagrams just to make it easier for you to remember. So in this image, we have um, a list of the agents associated with osteoporosis, starting with the most important, the corticosteroids, the proton pump inhibitors, because they inhibit the absorption of calcium, as well as the anti-diabetic drug thiazolidine dione, and you would have studied that while studying the anti-diabetic drugs. Similarly, unfractionated heparin is very closely associated, as well as certain drugs like cyclosporin, tacrolimus, as well as epilepsy medication. Again, over here we have this really interesting mnemonic for the risk factors of osteoporosis, and we have a hunched back lady, and on her back is the word access, where A is for alcohol use, the C is for corticosteroid use, the second C is for low calcium, and this is actually a very important triggering factor. The E is for estrogen low, the S is for smoking, and the last S is for a sedentary lifestyle. And I'll be explaining the last point in considerable detail because it is important. So by early adulthood, peak bone mass is achieved, and after that particular time, it begins to decrease at a rate of 0.7% per year. So this is actually a natural phenomena. And the magnitude of the peak bone mass is affected by multiple factors such as genetics, by the diet, as well as by the hormonal status. I will repeat, age related bone mass is an entirely natural phenomena. So now we'll be talking about the two main primary causes of osteoporosis, primarily postmenopausal and also the senile. Okay, starting with the senile causes, and then we'll talk about the postmenopausal. And there's an interesting diagram in both big and mini, my apologies, in big and medium Robbins, which kind of illustrates this point. So why is there the development of osteoporosis with age? Because over time there are age related changes in the bone. Specifically, the osteoblast of elderly individuals, they have reduced proliferative and reduced biosynthetic potential. So there are two types of cells associated with bone metabolism: the osteoblasts, which are responsible for laying down new bone, and the osteoclasts, which are responsible for basically breaking it down. So the osteoblast of elderly individuals compared to that of young individuals have reduced proliferative and biosynthetic potential, मीनिंग नए नए जो नए ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो बनते भी नहीं हैं, मुश्किल से बनते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो उनकी जो एबिलिटी होती है ना टू सिंथेसाइज बोन मैट्रिक्स वो भी रिड्यूस्ड है. सो दिस इज़ अ नाइस लाइन, इट्स बिट कैची तो याद भी रहती है. रिड्यूस्ड प्रोलिफरेटिव एंड बायोसिंथेटिक पोटेंशियल. इसके अलावा देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स लाइक ग्रोथ फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द बोन मैट्रिक्स, लेकिन वक्त के साथ साथ they lose their ability, they lose their biological punch, meaning they lose their biological potential. यानी growth factors उधर ही होते हैं, यानी वो जो proteins bound है ना extracellular matrix के साथ, they're still over there but they have lost their effect with time. Normally ये proteins क्या करते थी, they are mitogenic to osteoprogenitor cells and they stimulate the synthetic activity of the osteoblast. What does mitogenic mean? Something जो कि promote करता है proliferation को, किसकी, osteoprogenitor cells की, जो कि normally mature करके osteoblast बनाते हैं. And secondarily they were supposed to be or they used to stimulate osteoblastic synthetic activity, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी ये जो ability है it wears down. So this is very important. वो पूछते हैं SCQ के तौर पर कि pathogenesis बताओ osteoporosis का in the senile as well as the postmenopausal age group. Senile osteoporosis को हम low turnover variant भी कहते हैं, and जो reduced physical activity है ना elderly में, that probably also has an effect on the development of osteoporosis. आगे they've talked about the role of the body as calcium state, ठीक है,
एंड दैट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस. थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जब कैल्शियम कम होती है तो ऑटोमेटिकली पीटीएच के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फीडबैक. ठीक है. और सिमिलरली जो विटामिन डी है उसके लेवल्स कम होते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द डाइट इन समवन हु हैज़ malnutrition. तो बेसिकली लॉट ऑफ स्टफ हैपन्स टुगेदर. अब बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड वाई देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप. इन द डेकेड आफ्टर मेनोपॉज बोन मास में ईयरली रिडक्शन होती है. ठीक है. जो कॉर्टिकल बोन है ना, बोन के दो पार्ट्स होते हैं. जो बाहर वाला थिक पार्ट होता है उसको हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ द हवर्जन सिस्टम. ठीक है. हवर्जन सिस्टम में बीच में हवर्जन कैनाल होती है सराउंडेड बाय लैमेले ऑफ बोन, जिसमें ऑर्गेनिक पोर्शन भी है और इनऑर्गेनिक पोर्शन भी है. और जो लैमेले ऑफ बोन है उनके इन बिटवीन मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं. तो कॉर्टिकल बोन का भी लॉस हो रहा होता है और कॉर्टिकल बोन के अंदर जो कैंसलस स्लैश स्पॉन्जी बोन होती है ना, उसका भी लॉस हो रहा होता है. सो दिस इज़ अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. सो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन. ठीक है. इन विमेन इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप कंपेयर्ड टू सिमिलर एज ग्रुप इन मेल्स. ठीक है. यानी हार्मोन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है बोन लॉस की. ठीक है ना. सो वाई इज दिस हैपनिंग? जो सेंट्रल पैथोजेनिक इवेंट है ना इज़ द ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी विच अकर्स पोस्ट मेनोपॉजली. ठीक है. इसलिए ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ अ पॉसिबल एंड क्वाइट इफेक्टिव थेरेप्यूटिक मोडालिटी. अच्छा, अगर वो पूछें कि ईस्ट्रोजन की वजह से बोन लॉस कैसे हो रहा है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इफेक्ट है ना ईस्ट्रोजन का ऑन बोन मास इज़ एक्चुअली मीडिएटेड बाय साइटोकाइंस. ठीक है. अच्छा, जब ईस्ट्रोजन के लेवल बॉडी में कम होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर मेनोपॉज, तो एकदम से सर्टन साइटोकाइंस इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं. इन ये जो साइटोकाइंस हैं दे बेसिकली गो टू द ऑस्टियोब्लास्ट एंड द ऑस्टियोसाइट्स. और ऑस्टियोब्लास्ट पर दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ रैंक लाइगेंड एंड ऑस्टियोसाइट्स पर दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ रैंक. तो जब भी इंटरेक्शन होता है ना ऑस्टियोब्लास्ट के रैंक लाइगेंड का विद द रैंक प्रोटीन द रैंक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ऑस्टियोसाइट, तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो ऑस्टियोसाइट्स है ना दे बिकम एक्टिवेटेड. अगर ये इंटरेक्शन ना हो तो ऑस्टियोक्लास्ट आर नॉट एक्टिव. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ हैपनिंग कि जो नॉर्मल बॉडी है ना उसमें ऑस्टियोक्लास्ट सिर्फ तब एक्टिव होते हैं जब उनका रैंक रिसेप्टर इंटरैक्ट करता है ऑस्टियोब्लास्ट के रैंक लाइगेंड के साथ. एंड नॉर्मली दिस इंटरैक्शन इज़ मॉड्यूलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड ऑस्टियोप्रोटेग्रेंस. तो ये बैलेंस होता है इन तीनों की एक्टिविटी के बीच में. लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है एट द टाइम ऑफ पोस्ट मेनोपॉज, जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं, सर्टन साइटोकाइंस के लेवल्स बढ़ जाते हैं. इन साइटोकाइन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF. इनकी वजह से एक्सप्रेशन बढ़ती है रैंक रिसेप्टर की भी और रैंक लाइगेंड की भी. इंटरैक्शन की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है एंड दिस इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी in the case of the postmenopausal female is associated with osteoporosis. यानी जो सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है इट इज़ बिकॉज जो ऑस्टियोब्लास्ट की प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी है और बायोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है विद एजिंग. जबकि इन द केस ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ऑलराइट, नॉर्मली ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में देयर आरंट एनी साइंस एंड सिम्टम्स बिफोर अ फ्रैक्चर हैपन्स. ठीक है. सो बोन एक्स in the absence of fractures is not something associated with osteoporosis. पहली बात. सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ एरियाज हैं बॉडी के जहाँ फ्रैक्चर्स मोर कॉमन है. सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं वर्टीब्रा में. सर्वाइकल में नहीं इतने कॉमन होते हैं बट जो थोरैसिक एंड लंबर पार्ट्स है ना वहाँ पर वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली होते हैं. एंड जो क्रॉनिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स है ना विच आर मोर कॉमन दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पेन. लेकिन जो एक्यूट वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स है ना दे आर एसोसिएटेड क्लासिकली विद पेन एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइट लॉस एंड द डेवलपमेंट ऑफ काइफोसिस. ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट
कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं वो सिम्टोमेटिक भी हो, मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। लेकिन जो एक्यूट वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं ना, जिनको हम वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स कहते हैं, they are associated with pain and they're associated with height loss and they're associated with kyphosis. I have an interesting image. So basically vertebral fractures are most common and they can be asymptomatic if they're chronic, and the acute ones are associated with pain, and oftentimes vertebral fractures, they're symptomatic because they cause height loss because of the compression fractures and because of the resultant kyphosis, which you can see depicted in this image, as well as the cervical lordosis. So these are very interesting images, and you can see the credit at the bottom. So you can see the kyphosis and you can see the cervical lordosis. ठीक है. इसके अलावा osteoporosis is frequently associated with femoral neck fractures यानी hip fractures, as well as by something called the Colles fractures. The Colles fractures are fractures of the distal radius. ठीक है. And I'll show you another image for that. So you can see the fracture of the distal radius over here, you can see it, and in this image you can see the resultant bump. ठीक है. याद रखना है कि जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं वो मोस्टली थोरासिक और लंबर एरियाज में होते हैं एंड नॉट इन द सर्वाइकल. दे कैन बी सिम्टोमेटिक बट व्हेन एक्यूट आर क्वाइट पेनफुल. और अगर मल्टीपल वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो ना, वेदर एक्यूट और क्रॉनिक, मोस्टली क्रॉनिक, तो वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड लॉस ऑफ हाइट एंड द वेरियस डिफॉर्मिटीज़. ठीक है. मैंने लॉस ऑफ हाइट को डिपिक्शन नहीं मुझे मिली थी, but I did show the various deformities resulting from chronic and multiple fractures, multiple compression fractures of the vertebrae. ठीक है. जिसमें क्या क्या शामिल है? लंबर लॉर्डोसिस डेवलप कर सकती है. उस इमेज में सर्वाइकल लॉर्डोसिस था, एज वेल एज काइफोस्कोलियोसिस. ऑलराइट. इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिकॉज बाकी एरियाज में भी फ्रैक्चर होते हैं ना, इंक्लूडिंग द फेमरल नेक फ्रैक्चर विच वॉज शोन इन दैट पर्टिकुलर कार्टून. स्पाइन के भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. इनकी वजह से ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, बिकॉज जब बोन फ्रैक्चर होते हैं तो लिपिड ड्रॉपलेट्स एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. यू कांट रियली रिलायबली यूज प्लेन रेडियोग्राम्स टू बेसिकली डिटेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. इसके अलावा अगर आप मेजर करने की कोशिश करेंगे ना कैल्शियम फास्फोरस या अल्कलाइन फॉस्फेटेस को, तो ये भी डायग्नोस्टिक नहीं होंगे. सो दिस इज़ अ बिट प्रॉब्लमेटिक. ठीक है. जो मेजरमेंट्स हैं ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड अल्कलाइन की, इस सिनारियो में दे आर नॉट डायग्नोस्टिक. देयरफॉर इसको डायग्नोस करना मुश्किल है. ठीक है. और तब डायग्नोसिस तब होता है जब फ्रिजिलिटी बोन की इतनी हो चुकी होती है कि फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, और वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स. ठीक है. देयर आर सर्टन क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं डेक्सा स्कैन्स. ये बेहतरीन हमारे पास इमेजिंग टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डेक्सा स्कैन, डुअल एनर्जी, एक्सरे अब्जॉर्प्शोमेट्री. ठीक है. अच्छा, प्रिवेंशन पता होनी चाहिए, विटामिन डी इनटेक एट्सेट्रा. ये इमेज इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए. इसमें आप ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल बॉडी को देख सकते हैं जिसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की वजह से शॉर्टनिंग हो गई है. ये भी बहुत ही ऑब्वियस है, इसीलिए हाइट लॉस होता है. ये पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ सुपर इंपॉर्टेंट इमेज. और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आई टेल दोस टू यू नाउ. सबसे अहम बात है ना वो बेसिकली यही है कि कॉर्टिकल बोन जो कि हवर्जन सिस्टम से बनी हुई होती है वो भी थिन होती है. जो ट्यूबैक्यूले हैं वो भी वाइडन हो जाते हैं. जो हवर्जन कैनाल है वो भी वाइडन हो जाती है. एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट. कोलीज फ्रैक्चर नहीं भूलना, हिप फ्रैक्चर्स नहीं भूलने हैं. आई विल सी इफ आई कैन फाइंड अनदर इंटरेस्टिंग इमेज. इन पर्टिकुलर एक्सरेज में आप कोलीज फ्रैक्चर को देख सकते हैं.